Question number 6 of the worksheet on power, energy, and work. A lorry of mass 12,500 kg travels along a road that has a straight horizontal section AB and a straight inclined section BC. The section of BC is 500 meters. The length of BC is 500 meters. The speed of the lorry at A, B, and C. The speeds of the lorry at A, B, and C are 17, 25, and 17 meters per second, respectively. Work done against the resistance to the motion of the lorry as it travels from A to B is 5,000 kilojoules. Find the work done by the driving force as the lorry travels from A to B. Okay, so they've given us the work done by the resisting force, and we have to find work done by the driving force. So it's the same formula of conservation of energy and work, which is work done by driving force plus loss in energy is equals to work done by resisting force plus gain in energy. Okay. Work done by driving force has to be found from A to B. So let's call it X plus loss in energy. So which energy is the system losing as it goes from A to B? Is it losing kinetic energy? Is it losing potential energy? As it goes from A to B, the height stays the same from A to B. That means there's no change in potential energy. So delta PE from A to B is 0. Change in potential energy from A to B is 0. And the kinetic energy actually increases because initially the speed is less at A, and then at B the speed becomes higher. So that's a gain in kinetic energy. So with loss in energy, we write 0 because there's no loss in potential energy. Okay. Work done by resisting force is given in the question, 5,000 kilojoules. So 5,000 and then another 1,000 joules. Plus gain in energy, that's going to be the gain in kinetic energy, which can be written as half m bigger speed square, which is v in this case, minus smaller speed square, which is u in this case. So I'm going to use plus half. Mass is 12,500. And then we have 25 square minus 17 square. This should give us the value of work done by driving force. Which comes out to be 7100, then 000 joules, or 7100 kilojoules. So, any questions here in part 1? We've simply used the equation for conservation of energy and work, और उसमें you have to figure out which energy is is increasing in value, that is which energy is in gain and which energy is in loss. So since it's a horizontal surface, there's no change in potential energy, so that is disregarded. And since the speed is increasing as it goes from A to B, so there's an increase in kinetic energy or a gain in kinetic energy. So we write it towards the right-hand side of the equation, where we're supposed to write the gain. अगर ये स्पीड कम हो रही होती, पहले 25 होती और बाद में 17 होती,
तो फिर हम इसको लॉस की साइड पे लिखते हैं, लॉस इन एनर्जी की साइड पे। ओके, पार्ट 2। As the lorry travels from B to C, the resistance to the motion is 4800 newtons and the work done by the driving force is 3300 kilojoules. Find the height of C above the level of AB. ठीक है, हाइट आएगी पोटेंशियल एनर्जी से, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स प्लस लॉस इन एनर्जी is equals to work done by resisting force plus gain in energy. Okay, work done by driving force given it, it's 3300 kilojoules. So 3300 and then 3 zeros plus loss in energy. तो अब काइनेटिक एनर्जी लॉस में है या पोटेंशियल एनर्जी लॉस में? The lorry is going from B to C. So B पे speed 25 है और C पे speed कम हो रही है. So that means which potential? potential तो increase नहीं हो रही, height बढ़ रही है B से C तक. Potential increase हो रही है. हाँ जी। Kinetic decrease हो रही है क्योंकि kinetic speed पे dependent होती है ना. तो देखो speed कम हो रही है. So loss in energy जो है ना वो kinetic energy. ये वाला काइनेटिक एनर्जी हो गया और गेन इन एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि हाइट बढ़ रही है। अच्छा, अब लॉस इन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में मैं हाफ और एम कॉमन ले रही हूँ, तो हाफ ब्रैकेट के बाहर आ गया, एम भी ब्रैकेट के बाहर आ गया, एंड इनसाइड द ब्रैकेट वी राइट बिगर स्पीड स्क्वायर माइनस स्मॉलर स्पीड स्क्वायर, सो 25 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स। अच्छा, अब रेजिस्टिंग फोर्स हमें खाली फोर्स गिवन है, वर्क डन बाय द फोर्स नहीं गिवन। हमें बताया हुआ है कि जब यहाँ 4800 multiplied by 500. यस, हमें ये पता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं 4800 न्यूटन्स की, सो वी नो द फोर्स बट वी नीड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता है, वर्क डन होता है work done by resisting force would be force into distance, ये फॉर्मूला है। तो फोर्स जो है रेजिस्टिंग फोर्स 4800 है और डिस्टेंस कवर्ड इज 500 meters, so we write 4800 into 500 plus loss in energy, sorry plus gain in energy। so जो गेन है वो काइनेटिक एनर्जी का गेन है, so gain in kinetic sorry potential energy का gain है, let me write that over there। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है mgh2 where h2 is the bigger height minus mgh1 where h1 is the smaller height। और ये हाइट्स जो होती हैं ये परपेंडिकुलर हाइट्स होती हैं। So I'm going to take mg common, so वो हो गया h2 which is the bigger of the two height and minus h1। So this could be h2, this perpendicular distance, और यहाँ पे h1 would be 0 क्योंकि यहाँ तो कोई height है ही नहीं from the surface। So h1 will be 0 in this case and h2 is h2। So mg bracket h2 minus h1 यहाँ लिख दिया, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। So m is 12500, G is 10, height 2 हमने find करनी है, height 10। So now in all of this make height 2 the subject
and you should get your answer. लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीटली कैलकुलेटर में एंटर करके सिंप्लीफाई करो। बेटा किसी को माइक म्यूट करने की जरूरत है, प्लीज डू दैट। 4800 इंटू 500 निकाल के इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द अदर रिजल्ट, और फिर 12,500 इंटू 10 को डिवाइड कर लेंगे। सो न्यूमरेटर शुड बी 3300,000 plus half times 12500 and then 25 square minus 17 square। इसके रिजल्ट में से हमने 4800 इंटू 500 सब्ट्रैक्ट कर लिया, और इसके रिजल्ट से हमने 4800 सॉरी 12500 इंटू 10 डिवाइड कर लिया, which gives height is equals to 24। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे क्या किया। पहले इसको और इसको ऐड कर लिया, you can do this separately, I've done it all in one step। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया दूसरी साइड पे ले जाके, और फिर इसको डिवाइड कर लिया, it gives 24 meters। Okay, next question। A particle P of mass 1.2 kg is released from rest at the top of a slope and starts to move. The slope has a length of 4 meters inclined at 25 degrees to the horizontal. So this length is 4 meters and this angle is 25. Okay. The coefficient of friction between P and the slope is 1/4. So we know that mu is 1/4. That means there's friction on the surface. Find the frictional component of the contact force on P. So आपने frictional force find करनी है जो कि equal होती है mu r के। म्यू तो हमें पता है 1/4 है। व्हाट अबाउट आर? उसके लिए यहाँ पे पार्टिकल ड्रॉ करते हैं। तो पार्टिकल के इस डायरेक्शन में होती है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और उसके ऑपोजिट है वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा। So r would be equals to mg cos theta। 1/4 into m is 1.2 into 10 into cos 25। That gives 2.7189, which is 2.72। Okay. Find the acceleration of P। तो अब ये सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन का ही क्वेश्चन है
क्योंकि ये एक पार्टिकल है, इट्स नॉट एन इंजन जिसपे कोई पावर अप्लाई हो रही है या जिसपे कोई वर्क की हमें वैल्यू गिवन है. इट्स जस्ट अ पार्टिकल गोइंग डाउन द स्लोप. सो इसमें हम वर्क पावर एनर्जी नहीं यूज कर रहे अभी, बिकॉज देयर इज नो पावर इन दिस सिस्टम. इस पार्टिकल के अंदर कोई इंजन नहीं है, अनलाइक अ लॉरी, अनलाइक अ कार जिसके हमने पहले क्वेश्चंस किए. ओके, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए वही कर लेते हैं. फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए. फॉरवर्ड फोर्स होगी इसका वेट का कंपोनेंट विच वुड बी एम जी साइन थीटा, और सिंस इट्स गोइंग डाउनवर्ड्स तो फ्रिक्शन बैकवर्ड्स होगी म्यू आर. सो अब फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए करेंगे. फॉरवर्ड फोर्स इज एम जी साइन थीटा, so 1.2 into 10 into sine 25 minus backward force. We've already calculated the frictional force, which is 2.7189 is equals to mass 1.2 into acceleration, which gives 1.96 meters per second square. Next is find the speed with which P reaches the bottom of the slope. So अब हमें U पता है, was released from rest, so U is 0. हमें distance covered पता है, distance of the slope 4 meters. हमें acceleration पता है 1.96. अब हमने find करना है V, the speed at the bottom of the floor. So we can use V square is equals to U square plus 2AS. So it's going to be V equals square root 0 square plus 2 times 1.96 times 4, which gives 3.96. So the first part was basically just a revision of the previous topics. Okay, next part देखते हैं, part 2. After reaching the bottom of the slope, P moves freely under gravity and subsequently hits the floor, which is 3 meters below the bottom of the floor. Okay, so यहाँ पे slope खत्म हुई and then the particle encounters free fall drop, and then here's the bottom. So right before it falls, we have its initial speed, which is just calculated 3.96. Ideally, आपको unrounded value use करनी चाहिए, पर मेरे पास है नहीं, so I'm just using 3.96 जो पिछले part में हमने final speed निकाली है. अब वो initial speed होगी. Okay. अब free fall में acceleration is 10 meters per second square. Or this distance is 3 meters. So S is 3 meters. अच्छा, मैंने पार्ट बी पहले स्टार्ट कर दिया, पार्ट ए भी था इसका, बट चलो लेट्स डू बी. आई एम डूइंग 2B first. Find the speed with which it hits the ground. So V is equals to question mark. So same formula, V square is equals to U square plus 2AS. Substitute the values.
3.96 square plus 2 times 10 times 3 and then whole square root gives 8.7. ओके, पार्ट ए है इसका. फाइंड द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी of P during the motion from the bottom of the slope until it hits the floor. Okay. Potential energy is mgh. This would be part A of 2. Sorry. Change in potential energy is mgh2, which is the bigger height, minus mgh1, which is the smaller height, or in other words, mg bracket h2 minus h1. Okay. M is 1.2. G is 10, and difference in height would be the initial height is h2, and then this final height will be h1, which would be 0. So h2 we हमें पता है, which is 3 minus 0. So 1.2 into 10 into 3 is the answer, which is 36 joules. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताओ. Okay. Question 8. The diagram shows a vertical cross-section of a surface. A and B are 2 points on the cross-section. A particle of mass 0.15 kg is released from rest at A. So U is 0 at A. Assuming that the particle reaches B at a speed of 8, so V would be 8, and there's no resistance to motion, find the height of A above B. So you have to find this height, which I'm calling H2 or H1, the first height, the initial height. So I'm calling it H1. Okay. So same formula, work done by driving force plus loss in energy is equals to work done by resisting force plus gain in energy. So this is a question about a particle. तो कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, इस पार्टिकल का कोई इंजन नहीं है जहां से ड्राइविंग फोर्स आएगी, कोई पावर आएगी या कोई वर्क डन बताया होगा. सो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज 0 बिकॉज देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स. वो इंजन से मिलती है. इसी तरह बताया हुआ है कि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है इस सरफेस पे, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स भी 0. अब कौन सी एनर्जी लूज हो रही है और कौन सी एनर्जी गेन हो रही है as we go from A to B? हाइट जो है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. हाँ क्योंकि हाइट कम हो रही है.
ठीक है, तो ये जो लॉस जो है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है क्योंकि स्पीड पहले 0 थी, कम थी, और एंड में 8 हो गई है, ज्यादा हो गई है, सो ये काइनेटिक एनर्जी। So the formula just becomes loss in potential energy is equals to gain in kinetic energy. क्योंकि बाकी दो पैरामीटर जीरो, ठीक है। So this is loss in potential energy is equals to gain in kinetic energy. अब हम करेंगे mgh1 which is the bigger height minus h2 is equals to half m the bigger speed which is v squared minus the smaller speed u squared. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और ईच की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे तो हाइट 0 है बी की, बी पे, सो हाइट 2 इज इक्वल्स टू 0। okay, so m is 0.15 into g is 10 into height, bigger height is h1, smaller height is 0, is equals to half into 0.15 into 8 square minus 0 square, which gives 1.5 h1 आ गया इस साइड पे, is equals to 0.5 into 0.15 into 8 square, यहाँ पे आ गया 4.8, and when you divide you get 3.2. Okay, part 2. Assuming instead the particle reaches B with the speed of 6 and the height of A above B is 4, find the work done against the resistance to the motion. अच्छा, अब कोई रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है और उसका वर्क डन पूछा। okay, so now the parameters have changed. The final speed is now 0, so v is sorry, the final speed is now 6, so v 6 कर दिया, u अभी भी 0 है। हाइट जो है this is 4 और दूसरी हाइट अभी भी 0 है, यहाँ पे हाइट 0 होगी। okay, so same formula, work done by driving force plus loss is equals to work done by resisting force plus gain. वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स अभी भी 0 है क्योंकि ये एक सिंपल पार्टिकल है, ये एक कार या लॉरी नहीं है जिसका इंजन हो, तो ड्राइविंग फोर्स खाली इंजन से आती है, सो वो 0। प्लस लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, so I'm going to do mg h2 which h1 which is the bigger height minus h2 which is 0 is equals to work done by resisting force find करनी है प्लस गेन इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन हो गया क्योंकि स्पीड बढ़ रही, सो हाफ m ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। so m is 0.15 into 10 into bigger height is 4, smaller height is 0, is equals to x plus half times 0.15 times 6 square minus 0 square.
अब इसको सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड becomes 0.15 into 10 into 4, which is 6, equals x plus 0.5 into 0.15 into 6 square, which is 2.7. So 6 minus 2.7 is 2.2. नहीं, divide कर दिया मैंने, sorry. 6 minus 2.7 gives 3.3. So work done by resisting force would be 2.3, और यूनिट इसका जूल्स ही होता है, सॉरी 3.3. Okay, let's do one more question. अभी तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो. अच्छा, क्वेश्चन 9 पे. Lorry of mass 16,000 kg climbed from bottom to the top of a straight hill of length 1,000 meters. Okay, so there's a lorry going upwards. लॉरी का मास है 1600 kg, 16,000 kgs, और जो हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द हिल है वो 1,000 meters है, at a constant speed of 10. तो दैट मीन्स बॉटम पे भी स्पीड 10 है और टॉप पे भी स्पीड 10 है. दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी का कोई गेन नहीं है या लॉस भी नहीं है. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0 क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है. So that means delta KE is 0. The top of the hill is 20 meters above the level of the bottom of the hill. So ये 20 meters बता दिए, ये वाली height. The driving force of the lorry is constant and is equals to 5,000 newtons. अच्छा जी, so अब ये जो उसकी driving force है, क्योंकि ऊपर जा रहा है, driving force upward होगी, 5,000 newtons. Find the gain in kinetic in potential energy of the lorry. Okay, so change in potential energy or gain in PE would be higher potential energy, which will be half m h1 या h2, जिस कुछ भी कह लो उसको h2 कह लेते हैं. So half m, sorry half नहीं होता potential energy में, mgh. So mgh2 minus mgh1. So m is 16,000 into 10 into height 2 is 20 minus 16,000 into 10 into 0. इससे आंसर आता है 3200,000 joules. Okay. Part 2, work done by the driving force. अच्छा, अब वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स के लिए हमें ड्राइविंग फोर्स भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है, तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेंगे. वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो फोर्स गिवन है ड्राइविंग 5,000 इनटू डिस्टेंस भी given है, distance covered by this force is 1,000. It's going to be 5
million joules. Or you can also write 5,000 kilojoules. Part 3, work done against the force resisting the motion of the lorry. तो work done by resisting force find करनी है. जिसके लिए कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स हमें पता है, प्लस लॉस इन एनर्जी कोई नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ना लॉस है ना गेन है, प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स ये हमने फाइंड करना है, प्लस लॉस इन एनर्जी सॉरी प्लस गेन इन एनर्जी. So work done by driving force is ये 5 million. नहीं, work done by the driving force तो अच्छा, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स हमने निकाली है पिछले पार्ट में, सो वही है 5 million सॉरी, प्लस लॉस इन एनर्जी है ही नहीं सिस्टम में, 0 क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स हमने फाइंड करना है x प्लस गेन इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का गेन है क्योंकि हाइट बढ़ रही है वो भी हमने निकाली हुई है 3200,000. अब इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो x आ जाएगा 5 million minus 3200,000, which gives 18 and then 5 zeros. I'm sending you a new link. हम पार्ट 4 करेंगे पहले और फिर हम प्योर का पेपर करेंगे. On reaching the top of the hill, the lorry continues along a straight horizontal road against a constant resisting force of 1500 newtons. Okay, so up top pe surface is now horizontal and the lorry is still moving. और resisting force एक बता दी है which is 1500 newtons. Okay. Here the driving force of the lorry is now not constant and the speed of the lorry increases from 10 to 10 at the top of the hill to 25 at the point P. Okay, so now speed initially is 10 and then it becomes 25. So U is 10 here and V is 25 here. और इसका डिस्टेंस बताया हुआ है 200 meters. Sorry, 2000 meters. This distance is 2000 meters. Find the work done by the driving force. Okay. Of the lorry while the lorry travels from the top to the point P. Okay. So point P is here. And this is the top of the hill. Okay. So we have to find the driving force. So work done by driving force plus loss in energy is equals to work done by resisting force plus gain in energy. Work done by driving force find करनी है x plus loss in energy. Kinetic energy तो gain हो रही है, उसको right side पे लिखेंगे equation की.
पोटेंशियल एनर्जी में ना गेन है ना लॉस है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सो 0 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स। अब ये हमें डायरेक्टली नहीं गिवन, बट हमें फोर्स पता है रेजिस्टेंस की और डिस्टेंस पता है जितना ये फोर्स ट्रैवल करती है, तो इसकी जगह हम यूज कर लेंगे रेजिस्टिंग फोर्स टाइम्स डिस्टेंस कवर्ड। सो 1500 into 2000 प्लस गेन इन एनर्जी, गेन काइनेटिक एनर्जी का हो रहा है, सो हाफ मास है इसमें, क्या मास था, 16,000 टाइम्स 25 स्क्वायर माइनस 10। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाए, which gives 72,100,000 joules. That is the work done by driving force. Okay. Okay. That's all from mechanics today. अब मुझे बताओ प्योर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो।